राइट नाउ काफ़ी यूफोरिया है कि मार्केट्स ऑल टाइम हाई पे हैं एंड ऑल। लेकिन अगर हम कॉन्टेक्चुअली देखें तो हम लोग जो प्रीवियस हाई था विच वाज इन अक्टूबर 2021, वहाँ से सिर्फ 3% हायर है। सो लास्ट ऑलमोस्ट 20 months और सो एंड इफेक्टिवली वी आर हायर जस्ट बाई 3%। लेकिन आई थिंक इन्वेस्टर्स को हमेशा कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए। नंबर वन, यस वॉल कैप्स बहुत अच्छा अभी परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन अपने एसेट एलोकेशन पैटर्न को इग्नोर नहीं करना चाहिए। जो आपका गोल है, जो आपका टारगेटेड इन्वेस्टमेंट के लिए एसेट एलोकेशन पैटर्न आपने डिसाइड किया है, उसको फॉलो करना चाहिए। एक्चुअली अगर हम स्मॉल कैप कैटेगरी देखें तो स्मॉल कैप कैटेगरी काफ़ी इललिक्विड कैटेगरी होती है, जहाँ पे स्टॉक्स आपको ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत इजीली बाई कर सकें, बिकॉज जो एवरेज डेली ट्रेडिंग होती है वैल्यू टर्म्स पे, वो एक लार्ज कैप के जितनी नहीं होती है। नंबर टू, ये होता है कि जब आप कोई भी स्मॉल कैप स्टॉक को परचेज करने जाते हैं तो उसका एक इम्पैक्ट आता है। इम्पैक्ट से मेरा मतलब है कि जब आप बाई करने जाते हैं तो आपके बाइंग की वजह से, बिकॉज स्टॉक इलिक्विड है, स्टॉक प्राइस में पॉजिटिव मूव आता है, देखने को मिलता है। SIP जैसे, जिसको हम रुपी कॉस्ट एवरेजिंग भी कहते हैं एक्चुअली, इज समथिंग विच वर्क्स फैंटास्टिकली फॉर एनी एसेट क्लास which is volatile in nature. So higher the volatility, better would be the outcome by following a systematic investment strategy. Regarding my learnings, I mean, yes, the best part about my job is that you get to learn things every day. It gives you an opportunity to interact with people who are smarter than you, who have created $1 billion of businesses, and hence you get an opportunity to learn a lot from them. हेलो एवरीवन, मेरा नाम नम्रता अरोरा है एंड वेलकम बैक टू म्यूचुअल फंड्स की बात। जैसे आप सब जानते हैं, म्यूचुअल फंड्स की बात में हम ग्लोबल और इंडियन इकोनॉमिक कंडीशंस, कमोडिटीज, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, इन सब के बारे में बात करते हैं। और हर एपिसोड में वी ट्राई टू गेट समवन विद अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस इंडस्ट्री। तो आज भी हमारे साथ वी हैव समवन वेरी रिनाउंड इन द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। हिज नेम इज मिस्टर रुपेश पटेल। ही इज अ सीनियर फंड मैनेजर इन द इन्वेस्टमेंट equity team at Nippon Life India Asset Management Limited. He comes with over 23 years of experience across listed equity investments, private equity RE investments, credit risk assessment and evaluation of infrastructure projects. Before joining Nippon Life India Asset Management Limited, he was working with Tata Asset Management Limited since 2008, where he was managing some of their flagship funds like mid-cap growth, large cap, tax savings, focused equity fund and infrastructure funds. Mr. Rupesh Patel is a civil engineer graduate and an MBA in finance from Sardar Patel University. Hello everyone and welcome back to Mutual Funds की बात। जैसे आप सब जानते हैं, म्यूचुअल फंड्स की बात में वी ट्राई टू गेट समवन फ्रॉम द इंडस्ट्री विद अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस हु आंसर्स ऑल आवर क्वेश्चंस फॉर अस। तो आज भी हमारे साथ वी हैव मिस्टर रुपेश पटेल। ही इज द सीनियर एक्विटी फंड मैनेजर विद निपॉन इंडिया। हेलो रुपेश एंड वेलकम टू म्यूचुअल फंड्स की बात। Thank you, Namrata ji. Thank you for inviting me on your show. Sure. So let's get started with the questions, Rupesh. And I think the first question that I think हम सबके दिमाग में चल रहा है कि हम US और चाइना की जब बात करते हैं तो इकोनॉमी वाइज दे ऑब्वियसली हैव अ बिग इम्पैक्ट ऑन द इंडियन मार्केट्स। और अभी चाइना ने जो है गैलियम, जर्मेनियम, इन सब के जो एक्सपोर्ट है उस पर रिस्ट्रिक्शंस डाल दिए हैं, जिसकी वजह से ये एंटिसिपेशन है कि शायद वर्ल्ड इकोनॉमी पे भी इम्पैक्ट होगा, इंक्लूडिंग इंडिया। Considering ये जो दो metals हैं, they are used extensively in the internet infrastructure, right? तो आपके हिसाब से do you think this could probably start a US-China technology war? So first of all, I'll start with a disclosure that I am neither an expert on China or nor an expert on rare earth materials. But थोड़ा अगर long term सोचे तो so no doubt, I mean, current situation जहाँ पे दो large economies, one with access to technology, developed technology, and the other one trying to develop it, तो ये friction बहुत natural है. Secondly, अगर हम history देखें तो जब भी इस तरह के developments होते हैं, तो this becomes a trigger for innovation, wherein you try to look for other alternatives to such materials. And over a longer term, such innovations, they really play out. And at the same time, events like this, they encourage your trading partners or your buyers
to look for other reliable suppliers. So ये जो हम चाइना प्लस वन की बात करते हैं, आई थिंक इस तरह के इवेंट्स चाइना प्लस वन थीम को प्ले आउट करने के लिए और सपोर्ट करते हैं. So I think near term, yes, I mean, it can be challenges, but longer term, जैसा मैंने बोला, I mean, trigger for innovation to look for alternatives. And China plus one theme के लिए ये सब developments, I mean, I think हमें positive way में देखनी चाहिए. The China plus one would mean कि India will obviously benefit out of it then. All right. Okay. जनरली जब हम इक्विटी मार्केट्स की बात करते हैं ना, तो हमेशा ग्रीड और फियर डेफिनेटली हमारे दिमाग में आता है. देयर इज ऑलवेज अ सेंस ऑफ फियर जब मार्केट्स ऊपर जाता है, राइट? तो इंडियन स्टॉक मार्केट्स ने अभी टच्ड रिकॉर्ड हाइज. तो आपके ओपिनियन में ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जो आगे जाके स्टॉक मार्केट में, इंडियन स्टॉक मार्केट में इम्पैक्ट कर सकते हैं? I think it's a great question, लेकिन let's try to understand this context. I know राइट नाउ काफ़ी यूफोरिया है कि मार्केट्स ऑल टाइम हाई पे हैं एंड ऑल, लेकिन अगर हम कॉन्टेक्चुअली देखें तो हम लोग जो प्रीवियस हाई था विच वाज इन अक्टूबर 2021, वहाँ से सिर्फ 3% हायर है. सो लास्ट ऑलमोस्ट 20 months और सो एंड इफेक्टिवली वी आर हायर जस्ट बाई 3%. सो एक वो हमें ध्यान में रखना चाहिए. ऑल टाइम हाई इज़ फाइन बट इफेक्टिव रिटर्न इन लास्ट 20 months इज जस्ट 3%. सेकेंडली अगर हम मार्केट देखें तो नो डाउट लास्ट 3 महीने में हमने थोड़ा रीडिंग देखा है, बट दैट्स नॉट ओनली इन इंडिया. ग्लोबली मोस्ट ऑफ मार्केट्स हैव डन प्रीटी वेल, एंड जो हमने देखा है कि इंडिया इज़ नॉट एन एक्सेप्शन. इंडिया इज़ ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन दिस रैली और काफ़ी एक रीडिंग देखने को मिला है. बट एट द सेम टाइम हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि अक्टूबर 2021 से अभी तक अगर मार्केट रिटर्न्स 3% है, लेकिन इस पीरियड पे अर्निंग्स ग्रोथ तो हुआ है, which means valuations आज जो अक्टूबर 2021 में थे उससे रीजनेबल है, उससे कम या वहीं पर है अराउंड दैट. सो which means that from here on in terms of returns, instead of betting on P re-rating happening, we should be looking at earnings growth, because that would be bigger driver for market returns from here on. जहाँ तक रिस्क की बात है, नो डाउट आई थिंक एक जो बड़ा रिस्क है वो ग्लोबल वोलेटिलिटी है. अगर हम देखें लास्ट ईयर ग्लोबली मार्केट्स वर वरीड अबाउट इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट्स, इन सब फ्रंट पे क्या होगा, एंड राइट नाउ देर आर वरी ऑन स्लो डाउन ऑन ग्रोथ. सो इन सच एन वोलेटाइल एनवायरनमेंट जहाँ पे इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट लार्ज इकोनॉमीज लाइक US विल नॉट गेट इन टू डीप रिसेशन, बट देर विल बी सम स्लो डाउन ऑन ग्रोथ. सो ये जो वोलेटिलिटी, डिसअपॉइंटमेंट अराउंड ग्रोथ आ सकती है, दैट कैन बी अ बिग ड्राइवर फॉर मार्केट वोलेटिलिटी. From global point of view. Secondly, we should not forget that we are getting into a election heavy period now, right up to 2024 general elections. Yes. So around elections, I mean, there is a lot of narrative, a lot of volatility which comes there. Definitely markets preference would be continuity. So, I mean, any market's perception on some disruption, disappointment there can drive volatility in the market. So I think these are some of the factors which we should keep in mind and really should not get carried too much by the fact that markets are at all time high. Okay, fair enough. So मतलब एक बैलेंस होना चाहिए, ज़्यादा खुश भी नहीं होना चाहिए लेकिन दुखी भी नहीं होना चाहिए. It'll all be fine eventually. All right. Okay, so I think जब हम equity markets की बात करते हैं ना, the recent past बहुत awareness हुआ है, right? I think there's a lot of awareness about equity as an investment, and if we look at one category as as an investment is small cap. I think बहुत सारे जो investors हैं वो आजकल small caps पे focus कर रहे हैं. They want to start investing in small caps, even though we understand कि उसमें risk है. Investors ने करीब 5,470 odd crores have been pumped into the small cap schemes according to the AMFI data. तो आपके opinion में इतने सारे लोग small cap funds में क्यों invest कर रहे हैं? और जब हम स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें ऐसे क्या फैक्टर्स को कंसिडर करना चाहिए while we select a small cap fund for ourselves? Sure, you are very rightly observed that small cap funds of late have become flavor of the season, and one big reason is maybe after COVID हमने देखा है कि small cap funds के returns बहुत ही impressive हैं. As a category, small cap has done very well. So to some extent, I think some investors are just chasing those high returns. Everyone wants to be in a train which is moving faster. So the small caps are doing great. So everyone wants to be in small cap.
So that is also a factor which is right now playing out, and investors want to bet big on small cap as a category. लेकिन आई थिंक इन्वेस्टर्स को हमेशा कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए. नंबर वन, यस स्मॉल कैप्स बहुत अच्छा अभी परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन अपने एसेट एलोकेशन पैटर्न को इग्नोर नहीं करना चाहिए. जो आपका गोल है, जो आपका टारगेटेड इन्वेस्टमेंट के लिए एसेट एलोकेशन पैटर्न आपने डिसाइड किया है, उसको फॉलो करना चाहिए. एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, हमेशा याद रखिए कि स्मॉल कैप इज़ अ वॉलेटाइल कैटेगरी. सो हमने जो रिस्क की बात करी, अगर ग्लोबली या डोमेस्टिकली कोई भी इवेंट्स प्ले आउट होते हैं जिसकी वजह से मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ती है, तो स्मॉल कैप बीइंग अ वॉलेटाइल कैटेगरी, यहाँ पे आपको ड्रॉडाउन्स सिग्निफिकेंट देखने को मिल सकते हैं. सेकेंडली, बिकॉज वॉलेटाइल कैटेगरी है तो आपको इन्वेस्ट शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से नहीं करना चाहिए. सो हमेशा थोड़ा लॉन्गर टर्म थॉट रखना चाहिए, और जितना आप लॉन्गर टर्म थॉट से इन्वेस्ट करेंगे उतना आपको likelihood of positive return goes up. So I think these are some of the things which I would want investors to remember whilst investing in small cap funds today. Any specific way to select the right small cap funds? मतलब कोई ऐसे कोई अगर हमें अच्छा small cap fund select करना है तो कैसे select करें? I think I would say not only small cap fund but किसी भी अच्छे फंड के सिलेक्शन के लिए कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए. नंबर वन, कि जो फंड जो है वो कितना डाइवर्सिफाइड है इन टर्म्स ऑफ इट्स पोर्टफोलियो. सो डाइवर्सिफिकेशन अक्रॉस सेक्टर्स होना चाहिए, डाइवर्सिफिकेशन अक्रॉस कंपनीज होना चाहिए. सो आपका फंड ऐसा तो नहीं है कि जिसमें एक सेक्टर या एक स्टॉक की वजह से परफॉर्मेंस आ रहा है. और दूसरा इंपॉर्टेंट ये ध्यान में रखना चाहिए कि ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम there should be consistency in terms of beating the benchmark. So अगर किसी फंड ने over 5, 7, 10 years अपने stated benchmark को beat किया है, which means that definitely fund कोई disciplined approach follow करता है जो past में भी इतने लंबे समय तक फंड के फेवर में वर्क किया है. So the probability of that continuing to do well also goes up. So I think ये कुछ चीज़ें हैं जो investors को फंड select करते टाइम ध्यान में. So any fund, not just a small cap. Yeah, not just small cap fund. Fair enough. Just I think continuing with the small cap conversation that we've been having, Nippon India small cap funds ने जो है lump sum investments लेना बंद कर दिया है since 7th of July. तो आपके opinion में जो small cap funds होते हैं, so why do fund houses actually stop accepting fresh inflows? तो इसका रीज़न क्या है? नॉट जस्ट फ्रॉम योर फंड हाउस पॉइंट ऑफ व्यू बट इन जनरल क्या रीज़न होता है कि स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्टमेंट्स लेना बंद हो जाता है? इनफैक्ट हमने पास में ये भी देखा है कि कुछ मिड कैप फंड्स में भी फंड हाउस हैव स्टॉप्ड एक्सेप्टिंग वन टाइम इन्वेस्टमेंट्स. तो इस एक्शन से एज एन इन्वेस्टर मुझे कैसे बेनिफिट होता है? एक्चुअली अगर हम स्मॉल कैप कैटेगरी देखें तो स्मॉल कैप कैटेगरी काफ़ी इललिक्विड कैटेगरी होती है, जहाँ पे स्टॉक्स आपको ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत इजीली बाई कर सकें, बिकॉज जो एवरेज डेली ट्रेडिंग होती है वैल्यू टर्म्स पे वो एक लार्ज कैप के जितनी नहीं होती है. नंबर टू, ये होता है कि जब आप कोई भी स्मॉल कैप स्टॉक को परचेज करने जाते हैं तो उसका एक इम्पैक्ट आता है. इम्पैक्ट से मेरा मतलब है कि जब आप बाई करने जाते हैं तो आपके बाइंग की वजह से, बिकॉज स्टॉक इलिक्विड है, स्टॉक प्राइस में पॉजिटिव मूव आता है, देखने को मिलता है. सो अगर लेट्स से आपको एक एग्जांपल दें कि कोई स्टॉक जिसका प्राइस आज 100 रुपीज़ है और आप एक स्मॉल कैप, और ये स्मॉल कैप स्टॉक है और आप बाई करना चाहते हैं, तो आपके बाइंग की वजह से वो 100 रुपीज़, जब तक आपका पोजीशन बनेगा, दैट 100 रुपी कैन बिकम 110 रुपीज़. तो ये जो एक्सेस 10 रुपीज़ आपने जो बाई किया 100 रुपीज़ से स्टार्ट करके 110 तक में, सो ये आपकी इम्पैक्ट कॉस्ट होती है. सो विच इम्पैक्ट्स इन्वेस्टर रिटर्न्स. सो जब फंड हाउसेस, आई मीन वेदर निपॉन और एनीबडी एल्स, ये डिसीजन लेते हैं कि स्मॉल कैप फंड्स में हमें फ्लो रिस्ट्रिक्ट करना है, लंप सम इन्वेस्टमेंट्स रिस्ट्रिक्ट करना है, तो बेसिकली इसके लिए किया जाता है कि बुल मार्केट्स जो अभी जैसे कि हम हैं, जहाँ पे स्मॉल कैप्स में काफ़ी सारा इंटरेस्ट है, उस टाइम पे फंड मैनेजर्स को बल्क में काफ़ी फ्लोज आते हैं, काफ़ी पैसा आता है डिप्लॉय करने के लिए, जो एक इलिक्विड कैटेगरी में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. एंड इट इज़ नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हु हैव कम फॉर द लॉन्गर टर्म. एंड दूसरा, एक फिलोसॉफिकली देखें तो बुल मार्केट ही होता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा गलतियाँ होती हैं. So to protect investors' interest and to make sure that fund manager doesn't get carried too much by the euphoria in bull market,
I think such decisions are taken. So lack of liquidity, high impact costs, and to make sure that the investors' interests are protected. I think these are some of the reasons because of which fund houses decide to stop flows into mid cap or small cap category. Yeah, I think very interestingly said कि I think bull market में जो है लोग generally the euphoria is very high, right? And so yeah, I mean anyone could get carried away. So true. Okay. I think एक और जो category अभी हम discuss करने वाले हैं which is flexi cap. Flexi cap में भी as a category बहुत interest रहता है. Flexi cap category ने जो है पिछले 6 महीनों में करीब 8.3% का रिटर्न दिया है. तो आपके ओपिनियन में जो फ्लेक्सी कैप फंड्स होते हैं वो एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में कैसे फिट होते हैं एंड हाउ इम्पॉर्टेंट आर दीज फंड्स फ्रॉम अ पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू, राइट? कि अगर मुझे अपना पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करना है तो मैं इसमें कितना एलोकेशन दे सकती हूँ इन फ्लेक्सी कैप एज अ कैटेगरी? आई थिंक कोई भी फंड जिसमें एज पर द मैंडेट कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टिंग अक्रॉस मार्केट कैपिटलाइजेशन और अक्रॉस एनी सेक्टर्स, ऐसे फंड्स इन्वेस्टर के कोर होल्डिंग होने चाहिए. सो फ्लेक्सी कैप फंड अगर देखें तो इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है फंड मैनेजर के ऊपर इन टर्म्स ऑफ मैंडेट कि आपको इतना लार्ज कैप रखना ही है, आपको इतना मिड कैप एलोकेशन करना ही है. जो एलोकेशन होता है अक्रॉस मार्केट कैपिटलाइजेशन वो फंड मैनेजर का डिसीजन होता है. इट गिव्स कंप्लीट फ्लेक्सिबिलिटी टू फंड मैनेजर टू कंस्ट्रक्ट द पोर्टफोलियो अकॉर्डिंग टू मार्केट कंडीशंस. सिमिलरली कोई सेक्टर बायसेस नहीं होते हैं. तो मेरा ऐसा मानना है कि जितने कम रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, जितनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी फंड मैनेजर को पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करने के लिए है, उतना बेटर आउटकम्स एक्सपेक्टेड होते हैं. And that's why I believe that Flexi or any such fund should be core holding of any mutual fund investor. And how much percentage allocation can I give? तो मान ली मेरा 80% allocation. I mean, it should be large allocation. At the end of the day, it depends on investors' risk appetite. How much you want to spread across, large caps or Flexi cap mandate or mid and small. Fair enough. बट कैन यू जस्ट ऑल्सो जस्ट ब्रीफली टेल अस कि अगर मुझे कोर पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करना है, मान लो मैं अपना 80% एलोकेशन कोर पोर्टफोलियो में डाल रही हूँ, तो उसमें क्या क्या फंड्स डाल सकती हूँ? एक तो लार्ज कैप हो गया, एक फ्लेक्सी कैप हो गया. Which are the other categories I could? So again, I mean, it depends on investor's asset allocation and his ability to take risk. It can be combination of debt and equity. It can be combination of pure equity and hybrid category funds. It can be multi-asset funds. So I think it's very investor specific rather than there is no general formula which one can. Okay. All right. Fair enough. Okay. Now I think we'll talk about something very interesting. SIPs. जो हम I think SIPs अब इतने famous हो गए. I think they are synonymous with mutual funds, right? लोगों को भले mutual funds ना पता हो, SIP ज़रूर पता होगा. And I think it's become a very popular tool of investing in mutual funds in the last couple of years. हमें लगता है कि SIP हमारे सारे सॉल्यूशंस का सारी प्रॉब्लम्स का एक सॉल्यूशन है कि अगर इक्विटी में इन्वेस्ट करना है तो SIP के जरिए कर दीजिए. तो आपके ओपिनियन में इतने सारे इक्विटी फंड्स के कैटेगरीज हैं, सो डू SIPs वर्क इन एवरी कैटेगरी या हम कुछ एक्सेप्शंस मान सकते हैं? सो SIP जैसे जिसको हम रुपी कॉस्ट एवरेजिंग भी कहते हैं एक्चुअली इज समथिंग विच वर्क्स फैंटास्टिकली फॉर एनी एसेट क्लास which is volatile in nature. So higher the volatility, better would be the outcome by following a systematic investment strategy. So I think in generally equity, I mean, whether you take large cap, mid cap, small cap, I would say in terms of volatility, maybe small caps are much more volatile, mid caps are much more volatile, but equity per se as an asset class is a volatile asset class जहाँ पे आपके returns straight line में नहीं आते हैं. So जब आप ऐसे उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो SIP is a superior way to invest over a longer period of time. So I would say that the success of SIP strategy depends on volatility of markets and volatility of underlying asset class. So अगर आप एक ऐसे पीरियड में हैं जहाँ मार्केट में volatility बहुत ज़्यादा है, then SIP would give you a superior outcome. In a trending market हो सकता है for a shorter period of time, it may appear that SIP is not a great strategy because in a rising market आपका जो every incremental investment है वो higher और higher price पे जाएगा.
बट आई थिंक दीज आर वेरी टेम्पररी फेजेस. बट अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो एक डिसिप्लिन सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट अप्रोच जनरली पेज ऑफ वेल. ओके, अभी जो आपका एक छोटा सा ना ट्रेड सीक्रेट पूछते हैं आपसे, तो ये बताइए कि आपके ओपिनियन में ऐसी कौन सी वो टेक्निक्स हैं जो मिड कैप फंड्स या स्मॉल कैप फंड्स फॉलो करते हैं टू पिक मल्टी बैगर स्टॉक्स? I think trick is very simple. Trick is find a business which can grow at reasonably high rate over longer periods of time. और अगर ऐसा business आपको मिलता है and it is run by decent management, then the second part of the trick is that you remain invested in this business. So the trick is, I mean, don't think short term, think longer term. Find a good business and remain invested in that business for longer period of time. I think that is what works for any equity investing strategy actually. Okay. Well, I guess selecting a multi-bagger stock is something which all of us would want to do, right? हम सब चाहेंगे कि हमारे पोर्टफोलियो में अगर एक या दो multi-baggers भी आ जाए तो we'll get very good returns. So, okay. All right. I think another category which is very interesting, लेकिन in the recent past may not have done that well, is index funds as a category. काफ़ी लोगों को ये बिलीफ सिस्टम था कि इंडेक्स फंड्स रिस्क फ्री होते हैं समहाउ, विच ऑब्वियसली ऑल ऑफ अस अंडरस्टैंड इज नॉट द केस. हमने 2008 में देखा है, 2020 में देखा है, जब मार्केट्स गिरे तो ऑब्वियसली इंडेक्स फंड्स हैव क्रैश्ड अलोंग विद दोज. एंड ऐसे बहुत सारे एक्टिव फंड मैनेजर्स थे इस टाइम में जिन्होंने लार्ज कैप फंड्स में सक्सेसफुली रिटर्न्स दिए हैं, एटलीस्ट दे हैव वेदर्ड द स्टॉर्म. तो आपके ओपिनियन में इंडेक्स फंड्स में ऐसे क्या रिस्क होते हैं जिनको हमें कंसिडर करना चाहिए? एंड ऑल्सो अगर मुझे एक इंडेक्स फंड सिलेक्ट करना है, देन हाउ डू आई सेलेक्ट द राइट इंडेक्स फंड फॉर माई सेल्फ? So again, I would say it's a great question and very right observation that it's a myth that index funds are less riskier. I would say कि index funds का जो risk है, जो underlying market है, underlying stocks हैं जो उस index को constitute करते हैं, उसका जो रिस्क है इंडेक्स फंड का रिस्क उससे अलग नहीं हो सकता है. सो इफ समवन इन्वेस्ट इन इंडेक्स फंड्स थिंकिंग दैट दीज आर लेस रिस्कियर एज कंपेयर टू एक्टिव फंड्स, सो इट्स completely myth, because at the end of the day the riskiness in index fund or an active fund will come from the underlying market or set of securities where you are making investment. Yeah. Number two, always remember that जब आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो अगर आप ऐसे मार्केट फेस में आते हैं जहाँ पे मार्केट काफ़ी ब्रॉड बेस्ड है, जहाँ पे बहुत सारे स्टॉक्स, बहुत सारे सेक्टर्स परफॉर्म कर रहे हैं, तो ऐसे मार्केट सिचुएशन में एक इंडेक्स फंड के एक इंडेक्स के अंडर परफॉर्मेंस का रिस्क, सो इंडेक्स का अंडर परफॉर्मेंस मीन्स इंडेक्स फंड का अंडर परफॉर्मेंस का रिस्क एज कम्पेयर टू ब्रॉडर मार्केट बढ़ जाता है. ऐसी सिचुएशन में एक्टिव फंड्स कैन डू अ बेटर जॉब बाय प्लेसिंग their bets outside index, by investing into multiple companies and sectors, and thereby creating that alpha by beating the benchmark. So I think there are phases जहाँ पे ऐसा लगता है कि इंडेक्स फंड्स बहुत अच्छा करते हैं. नो डाउट दे आर a good, viable, low cost option to participate in the market, but certainly they are not a low risk option as compared to active funds, and there can be instances where investing in active funds can be a better strategy as compared to investing in index funds. So just a simple question, अगर मुझे इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना है, assuming कि आई लाइक इंडेक्स फंड्स एज अ प्रोडक्ट, तो फिर मुझे वो मेरे कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा बनते हैं या सैटेलाइट पोर्टफोलियो का हिस्सा बनते हैं? आई वुड से कि आपने अगर एक इफेक्टिव कॉल लिया है कि आपको पर्टिकुलर मार्केट में इन्वेस्ट करना है, so I mean, I would, being an active fund manager, I would always place my bets on an active fund. Yeah. The probability of beating the benchmark, I mean, that's what I'm absolutely. Yeah. Okay. I would say if I am bullish on markets, then I would put my money, which has an optionality to give me returns better than the market. Yeah. All right. Okay. So I think we've spoken a lot about different categories. अब थोड़ा investor related questions थोड़ा discuss कर लेते हैं. So I think सबसे पहले अगर मान लीजिए एक investor है जो अपने 30s में है and he's just starting his investment in equity funds, तो
वो जो इन्वेस्टर है वो अपना ऑल वेदर पोर्टफोलियो कैसे क्रिएट कर सकता है? ऑल्सो यू नो ये भी बताइए कि एक इक्विटी एज एन असेट क्लास वो अलग अलग इन्वेस्टर टाइप के लिए अलग अलग कैसे हम प्लेस कर सकते हैं? सो वुड लाइक टू नो हाउ इम्पोर्टेंट इज इक्विटी एज एन असेट क्लास फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स? So I think equity as an asset class is an important one for each and every investor, because this is one asset class which can help you beat inflation over longer period of time. And there is enough data to prove that at the end of the day हम लोग investment करते हैं हमारा purchasing power protect करने के लिए और उसे बढ़ाने के लिए. So आपको equity एक ऐसा asset class है जो inflation को beat करके आपका purchasing power protect करता है. So I think equity exposure हर एक इन्वेस्टर के लिए इम्पॉर्टेंट है. अभी कितना equity exposure रखना, that is a function of investors risk appetite. So that's point number one. Point number two, आपका जो सवाल था कि एक इन्वेस्टर जो 30s में है उसको कैसे एक अच्छा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनाना चाहिए. आई थिंक कुछ बातों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए. नंबर वन, अपना असेट एलोकेशन पैटर्न डिसाइड कीजिए. तो आपके जो फाइनेंशियल सर्कमस्टेंसेस हैं, आपके जो फाइनेंशियल गोल्स हैं, आपके जो कैश फ्लोज हैं, उनको ध्यान में रख के एक असेट एलोकेशन पैटर्न बनाइए और उस असेट एलोकेशन पैटर्न को फॉलो करना चाहिए. आपने टॉप के शुरुआत में ग्रीड एंड फियर की बात करी, तो ग्रीड एंड फियर इन्वेस्टर्स के सबसे बड़े एनिमीज होते हैं. तो जब मार्केट में बहुत सिग्निफिकेंट करेक्शन आता है या मार्केट में बहुत ज़्यादा यूफोरिया होता है, तो अपने ग्रीड और फियर को कंट्रोल में रखना चाहिए और उसकी वजह से अपना असेट एलोकेशन पैटर्न को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए. नंबर टू, मार्केट को टाइम करना बहुत डिफ़िकल्ट है. सो आप पर्टिकुलरली नियर टर्म में तो कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है कि मार्केट कैसा बिहेव करेंगे. सो इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू टाइम द मार्केट, invest systematically, invest regularly. That will help you create a good long-term portfolio of equity investments or mutual funds. Third, and the most important thing which I would like to highlight is that believe in the power of compounding. हो सकता है आप जब इनिशियल पीरियड में इन्वेस्ट कर रहे हैं आपको लगेगा कि this amount is very small, it's not compounding at a higher rate, but when you invest for longer time is your friend. Actually you would see, I mean, the time spent in the market does wonders and to compounding, and hence invest from a longer term perspective. Believe in power of compounding. There will be ups and downs, but remain invested. That's wow. Okay. So I'm sure those are a lot of tips for investors who are starting their investments in equity as an asset class, and I can vouch for all of them. I mean, खुद हम 15-20 सालों से इन्वेस्ट कर रहे हैं, and I know compounding can do wonders to your portfolio, no denying that. All right. Okay. तो generally जब हम एक म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना होता है अपने लिए, हम पास्ट रिटर्न्स को देख लेते हैं, राइट? वी लुक एट द पास्ट परफॉर्मेंस एंड वी से कि ठीक है, ये फंड मेरे लिए अच्छा होगा. जस्ट लुकिंग एट रिटर्न्स may not be sufficient, right? I'm sure और बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिनको हम कंसिडर कर सकते हैं. तो एज अ फंड मैनेजर आप एक अच्छा इक्विटी फंड कैसे सेलेक्ट करते हैं, और आपके ओपिनियन में ऐसे कौन से रेशियोज हैं जो हमें देखने चाहिए, मे बी फ्रॉम द फैक्ट शीट, विच विल हेल्प अस इन सेलेक्टिंग द राइट फंड? सो आई वुड से कि इन्वेस्टिंग में इवैल्यूएशन के लिए कोई एक सिंगल पैरामीटर नहीं होता है जिसको हमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहिए. और जैसा मैंने पहले बताया, मुझे लगता है कि जो एक इम्पॉर्टेंट बात इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखनी चाहिए म्यूचुअल फंड्स को इवैल्यूएट करते टाइम, ये कि उनका जो अंडरलाइन पोर्टफोलियो है वो कितना डाइवर्सिफाइड है. अगर एक अच्छा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो अक्रॉस सेक्टर, अक्रॉस कंपनीज हैं, तो जब वॉलेटाइल फेज आएगा, जब फंड या फंड मैनेजर्स के व्यूज़ गलत जाएंगे, तो उस टाइम पे उस फंड में रिलेटिवली जो रिस्क, जो बेसिकली आपका जो रिस्क है पोर्टफोलियो में, वो रिलेटिवली कम होता है. इट कैन बी बेटर मैनेज्ड इफ द कंसंट्रेशन इज नॉट वेरी हाई. सो लुक फॉर अ वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो अक्रॉस सेक्टर्स, अक्रॉस कंपनीज. Second important thing I would say that look at the longer term track record of the fund and the fund manager in terms of beating the benchmark. ये जर्नी में there would be phases जहाँ पे funds with a very great long term track record will also underperform the benchmark, but short phases को नहीं देखना
चाहिए, बट ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम अगर कोई फंड कंसिस्टेंटली अपने बेंचमार्क को बीट कर रहा है, विच मीन्स दैट फंड इज फॉलोइंग एन इन्वेस्टमेंट अप्रोच, एन इन्वेस्टमेंट फिलोसफी or risk management philosophy, which is helping the fund to perform so consistently over longer periods of time. So I think ये कुछ factors हैं जिनको ध्यान में रखना चाहिए while selecting a particular mutual fund. Otherwise, there would be phases, in different phases, different investment styles work. And otherwise it would be again like, you are chasing the best performing stock in the market. Yeah, true, right? I mean, so many people would just look at performance, and I think surprisingly, at least, बहुत लोग सिर्फ 1 या 2 साल का performance ही देखते हैं. Like you rightly said, at least आपको थोड़ा लंबे समय का performance देखना चाहिए for you to understand कि fund ने कितना consistently perform किया है. Yes, okay. Now I think we'll talk a little bit about another very interesting asset class, which is real estate. Yes. Real estate as an asset class, बहुत सारे investors real estate में invest करना चाहते हैं. काफ़ी favorite investment option है for a lot of Indians, काफ़ी लंबे time से. In fact, RBI का जो survey है that says कि investments held by household indicates the same कि मतलब real estate is a favorite investment option. I'll add gold also to that list. You'll add gold also to that. Yeah, I agree. Yes, absolutely. So I think बहुत सारे लोग जो है ना आजकल जैसे प्लॉट्स खरीदते हैं या फिर घर खरीदते हैं मेट्रो सिटीज स्पेशली एज इन्वेस्टमेंट्स, और वो अपने इक्विटी इन्वेस्टमेंट पे फोकस नहीं करते हैं, राइट? बल्कि आई हैव सीन सो मेनी पीपल हु जस्ट स्टार्टेड देयर करियर्स जो स्टूडियो अपार्टमेंट्स खरीद रहे हैं. सो व्हाट वुड योर एडवाइस बी टू सच इन्वेस्टर्स जो अपने करियर की शुरुआत में ही रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर देते हैं? So, no doubt, number one, diversification is a good strategy. One should not put all their eggs in one basket. And for diversification, if you are looking at investing across different asset class, there's nothing wrong in it. But it is important to remember that, number one, we should have some competence in terms of investing in that asset class. Number two, अगर मैं equity और real estate का comparison करूँ, so equity is a very liquid asset class. So आज आपने investment किया, अगर आपको कल पैसों की ज़रूरत है किसी investment के लिए या किसी reason की वजह से, so you can sell and next day money will be in your account. Yeah. So it is as liquid as it can be. Same cannot be said about real estate. You may want to sell, but there may not be any buyers. So here there is complete transparency. Secondly, in real estate, quoted price and transaction prices, they can be very different. Then there are incidental costs which are much higher. Whereas in case of equity investments, when you are investing in the markets, it is as transparent as it gets. You get to see the price at which transactions are happening. You know the price at which your shares are getting sold, and you are very sure that next day money will be there in your account. So it has very clear advantages operationally also. And third thing, I think let's not forget that India is a growth market. There would be many businesses which will become much bigger in size as compared to they would compound at reasonably good rate over longer periods of time. And eventually stock prices are nothing else but reflection of earnings and earnings growth. So as these companies' earnings grow, it would get reflected in stock prices. So I think equity in India is a very good asset class, and one should not ignore it at the cost of some other asset class. I think one should follow a very balanced approach. But remember some of these things which I just mentioned. So, just adding on to this, in your opinion, अगर मान लीजिए हम घर को या गोल्ड को बोलते हैं कि ज्वेलरी अगर लोग खरीदे हैं, घर खरीदे हैं, तो वो इमोशनल असेट क्लास हो गई, राइट? लेकिन अब घर मान लो किसी को खरीदना है, व्हाट वुड बी द राइट एज इन देयर लाइफ टाइम जब वो घर खरीद सकते हैं? So again, it's very individual specific. It's a function of what kind of resources you have, what kind of financial goals, responsibilities you have. So very difficult to time, but just if we look at the trends, then the average age at which an individual used to buy a house in India earlier, that has consistently come down. Maybe because today, in terms of culture, as compared to our elders, current generation is more amenable to taking debt pretty early in their careers.
and that's why they are able to buy pretty or real estate pretty early in their careers. Yeah. And I think very clearly the average age when one purchases is one property, and that is consistently coming down. I would say that one should actually segregate these two things. One is buying property for your own consumption. Fine, I mean, and you want to own an asset where you want to stay, you like something, that's a completely different thing. But buying it for investment is a function of a lot of other things. You have to consider the liquidity, you have to consider the risk, you have to consider the potential upsides, which is there in other alternatives which are available. Okay. Thank you, Mr. Rupesh. So now I think we'll just ask you the second last question, which is tell us a little bit about your journey in the equity market. Tell us how you have been an investor and what you have experienced. And also म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने की कुछ बेसिक थंब रूल्स जो हमें याद रखने चाहिए जब हम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं. So I'll take the second question first, which is very simple to answer. I think the basic rules for investing in mutual funds, they remain the same as basic rules for investing in equities, which is think long term. It's a volatile asset class. There will be ups and downs, but remaining invested will pay off. Invest systematically. Don't try to time the market. I think remember some of these things, and it will really help you over longer periods of time to accumulate wealth. So that's what investors in mutual funds should remember. Regarding my learnings, I mean, yes, the best part about my job is that you get to learn things every day. It gives you an opportunity to interact with people who are smarter than you, who have created $1 billion of businesses, and hence you get an opportunity to learn a lot from them. My journey has taught me that it always pays to think long term again. I mean, you can't really take a view on what will happen to stock prices in near term. So instead of taking views on stock prices, focus on assessing the businesses, focus on their growth potential, focus on the quality of management, strength of balance sheet, which will help these businesses achieve their rightful place in the market. And I think this approach has really helped me, achieving whatever success I have in my investing career. So I think, there would be ups and downs. It's not that I have not made mistakes. I know I have made mistakes, but and I'm very sure that I will continue to make mistakes in future as well. But you have to remember that equity में जब आप invest करते हैं तो आपके outcome probabilistic होते हैं, outcome certain नहीं होते हैं, which means कि आप कभी भी ये मान के नहीं चल सकते हैं कि अगर like a fixed deposit where आपने 100 rupees invest करा है in a deposit which gives you 10% interest, at the end of year one, you will have 110 rupees in your account. Here, you invest with certain assumptions, and as those assumptions play out, outcomes can be better than what you expected. It can be worse than what you expected. So इसके लिए risk management बहुत important हो जाता है. So जब आप invest करते हैं एक probabilistic outcome asset class जैसे कि equity, so always remember the risk that what will happen when you will go wrong. So I think this is another big lesson which I have always tried to remember. Yeah. Oh, wonderful. All right. So just the last question, हमारे first time investors के लिए कुछ book recommendations? Okay. I would recommend read this book called One Up on Wall Street by Peter Lynch. Peter Lynch was a celebrity mutual fund investor with very successful long-term track record in US. So in this book, he has explained some very simplistic way how he used to evaluate stocks and how some of his big multi-baggers actually came into his portfolio. So he has talked about his investing journey. I think it's a very good read for an early investor. Second one, which I would recommend, again, I believe that it's a must-read book. It's around investment psychology. It's around actually psychology. It's called Psychology of Money by Morgan Housel. It really touches upon the psychological aspects of investing in general. I think these two books are a good one to start with. Then the list is pretty long, actually. Sure. Thank you so much, Mr. Rupesh. It was wonderful talking to you.
I'm sure हमारे viewers को बहुत learnings मिली होंगी आज के session में, and thank you so much for giving us your time and an opportunity to talk to you. So thank you so much for that. Thank you, Namrata and Groww for giving me this opportunity. Yeah, thank you. Wow, what a wonderful conversation with Mr. Rupesh. I'm sure आप सबको ये episode बहुत अच्छा लगा होगा, and I do hope you guys are waiting for the next one. तो let's quickly summarize जो भी हमने points discuss की, उनका मैं जल्दी से आपको एक summary दे देती हूँ. तो सबसे पहले हमने ये discuss किया कि देखा जाए तो चाइना ने अभी recently गैलियम और जर्मेनियम का जो है export पे काफी restrictions डाल दिए हैं, जिसकी वजह से US के साथ एक technology war शुरू हो सकती है. तो Mr. Rupesh says कि देखा जाए तो US already technology leader हैं, एंड व्हेन इट कम्स टू चाइना वो उस मुकाम तक पहुंचना चाहते हैं, तो वेरी नेचुरली इन दो देशों के बीच में फ्रिक्शन रहेगा ही, लेकिन ये इंडिया के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करता है. फिर हमने ये डिस्कस किया कि रीसेंट ट्रेंड देखिए तो स्मॉल कैप फंड्स में काफी इन्फ्लोज आए हैं, काफी इन्वेस्टर्स स्मॉल कैप फंड्स की तरफ झुक रहे हैं, उनमें इन्वेस्ट कर रहे हैं. तो मिस्टर रुपेश सेज कि काफी इन्वेस्टर्स स्मॉल कैप्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि स्मॉल कैप फंड्स ने रीसेंट पास्ट में काफी अच्छा किया है, लेकिन देखा जाए तो स्मॉल कैप एज अ कैटेगरी काफी वॉलेटाइल है, और अगर इन्वेस्टर्स स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उनको लॉन्ग टर्म टाइम होराइजन के साथ ही चलना चाहिए. तो ही सेज कि इट हेल्प्स अगर आप एक ऐसा स्मॉल कैप फंड चुन रहे हैं जिसका पोर्टफोलियो काफी वेल डाइवर्सिफाइड है, या फिर ऐसा पोर्टफोलियो जिसने कंसिस्टेंटली लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्मेंस दिया है. फिर हमने ये डिस्कस किया कि कुछ स्मॉल कैप फंड्स ने जो है लमसम इन्वेस्टमेंट्स लेना बंद कर दिया है, तो इसका क्या रीजन है. तो मिस्टर रुपेश सेज कि जो स्मॉल कैप स्टॉक्स होते हैं वो काफी इलिक्विड होते हैं, तो एक जो स्मॉल कैप फंड के जो मैनेजर होते हैं वो काफी स्ट्रगल करते हैं टू फाइंड गुड स्टॉक्स एट द राइट वैल्यूएशन, और ऑब्वियसली वो ओवर पे नहीं करना चाहते हैं स्मॉल कैप स्टॉक्स के लिए, तो इसीलिए वो लमसम इन्वेस्टमेंट्स रोक देते हैं इन द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स जिन्होंने ऑलरेडी स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट किया है विद अ लॉन्ग टर्म टाइम होराइजन. फिर हमने ये भी डिस्कस किया कि क्या जो SIP अप्रोच होती है वो सारे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं. तो मिस्टर रुपेश सेज कि अगर देखा जाए तो SIP जो है एज एन अप्रोच जो वॉलेटाइल एसेट क्लास होती है उनके लिए बहुत अच्छा काम करते हैं, क्योंकि जब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट्स के तरीके से आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट में डिसिप्लिन आ जाता है. शायद टेम्पररी राइजिंग मार्केट्स में SIP मे नॉट बी द बेस्ट अप्रोच, लेकिन ये फेज भी बहुत टेम्पररी ही रहता है. फिर हमने मिस्टर रुपेश से ये पूछा कि क्या वो हमें कुछ टेक्निक बता सकते हैं जो मिड कैप और स्मॉल कैप फंड मैनेजर्स यूज करते हैं टू आइडेंटिफाई मल्टीबैगर स्टॉक्स. तो मिस्टर रुपेश सेज कि दे आर ऑलवेज ऑन द लुकआउट फॉर सच कंपनीज जो लॉन्ग टर्म में रीजनेबली ग्रो हो सकती हैं, और अगर ऐसी कंपनीज आइडेंटिफाई हो जाती हैं तो वो उनको फिर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखते हैं. फिर हमने मिस्टर रुपेश से पूछा कि अगर एक इन्वेस्टर 30s में है और वो अपना ऑल वेदर पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू बनाना चाहते हैं तो उनको क्या करना चाहिए. तो मिस्टर रुपेश सेज कि सबसे पहले एज एन इन्वेस्टर आपको अपनी एसेट एलोकेशन फिक्स करनी चाहिए और ग्रीड और फियर को कंट्रोल करना चाहिए. एज एन इन्वेस्टर आपको सिस्टमैटिकली और रेगुलरली इन्वेस्ट करना चाहिए, इट कैन डू वंडर्स, एंड एट द सेम टाइम बहुत स्ट्रॉन्ग फंड्स का अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहिए. ही ऑल्सो सेज कि टाइम इन द मार्केट कैन डू वंडर्स बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, और इसलिए आपको लंबे समय के लिए इन्वेस्टेड रहना चाहिए. फिर हमने मिस्टर रुपेश से ये भी डिस्कस किया कि काफी लोग आजकल मेट्रो सिटीज में लैंड या प्लॉट खरीदना चाहते हैं, सो इज दिस अ गुड स्ट्रैटेजी, क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं तो अपनी इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स पे उतना फोकस नहीं कर पाते हैं. तो मिस्टर रुपेश सेज कि देखा जाए तो अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो लिक्विडिटी बहुत रहती है, एंड एट द सेम टाइम देयर इज अ हाई लेवल ऑफ डिग्री ऑफ ट्रांसपेरेंसी. अगर आप रियल एस्टेट की बात करें तो रियल एस्टेट में लिक्विडिटी उतनी अच्छी नहीं होती है, और अगर आपको अपना रियल एस्टेट प्रॉपर्टी को बेचना है तो शायद आपको सही प्राइस भी ना मिले एट द टाइम ऑफ सेलिंग. इंडिया जो है एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, एंड एज यंगस्टर्स you should invest in equities to really make use of equities as an asset class, और एक बैलेंस पोर्टफोलियो होना बहुत जरूरी है. फिर हमने मिस्टर रुपेश से उनकी कुछ लर्निंग्स के बारे में पूछा फ्रॉम द इक्विटी मार्केट, एंड मिस्टर रुपेश सेज कि सिर्फ स्टॉक मार्केट पे फोकस नहीं करना चाहिए, बल्कि यू शुड फोकस ऑन बिजनेसेस एंड कंपनीज इन द पोर्टफोलियो ऑफ योर म्यूचुअल फंड्स, और हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए. सो दैट वाज अबाउट इट इन दिस पर्टिकुलर एपिसोड. आई एम श्योर आप सबको ये एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा. Please do like this video, share it with everyone, and please do subscribe to the Groww Mutual Fund channel. Thank you so much for watching. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.